अभी जितने भी आएंगे सबको एडमिट करते बैठना पड़ेगा ना। आप ओपन रख लो ना वो मत रखो। आने दो सबको। आप कितने लोगों को देखते बैठेंगे? ना वो
Yes. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अखिल भाई वेट कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Shoaib Mainuddin. This this course is organized by IMA YouthWing. I request to Brother Akib to Quran, recite the Quran Surah. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। खलक़ल इंसान। अन्ना उस्तगना। इन्ना इला रब्बिका रुजआ। अरैतल्लज़ी यना। अबदन इज़ा सल्ला। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया। उसी ने इंसान को जमा हुए खून से पैदा किया। पढ़ो तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज़्यादा करम वाला है जिसने कलम से तालीम दी। इंसान को उस बात की तालीम दी जो वो नहीं जानता था। हकीकत यह है कि इंसान खुली सरकशी कर रहा है क्योंकि उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया है। सच तो यह है कि तुम्हारा परवरदिगार ही तरफ से सबको लौटना है। भला तुमने उस शख्स को देखा है जो एक बंदे को मना करता था जब वो नमाज पढ़ाता था। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर आकिब। और दीगर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज अपना वॉइस अनम्यूट कर दीजिए। I welcome you all to the Excel course organized by IMA YouthWing. Before we begin, I would like to introduce you to the YouthWing and its activity. IMA YouthWing is a vibrant youth and student organization with a vision to cultivate better citizens who positively impact society. We offer wide range of activity and initiatives from educational program to spiritual enrichment and community outreach. Our aim to provide a platform where individuals can not only develop their skills and talent but also activity participate in the community building. Youth Wing is a community deeply rooted to fostering personal growth, community engagement, and its Islamic awareness among youth individuals like yourself. At the Youth Wing, we are not just about the excelling skills.
We are community to nourishing hearts and minds. Our program go beyond conventional learning, interviewing valuable Islamic teaching, tarbiyah and spiritual social responsibilities. Through various activities like volunteering, educational programs, social events, and impactful community service initiatives, the Youth Wing offer you platform to learn and grow and make differences. So now I would like to invite our co-host, Brother Asim, to introduce our trainers. Hello, participants. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and blessings be upon everyone. I welcome you all to this Excel course, which is organized by Indian Muslim Association Youth Wing, which you had heard the introduction just now by Brother Shoaib. So before we start the course, I would like to introduce you to the trainers, which will be giving us the training of Excel. So first, we have Mr. Jafar Sadiq sir. I would request Jafar sir to turn on the camera. So Jafar sir is from Bangalore, India. He's having bachelor's degree in visual communication and living in Kuwait since 20 years. Having more than 20 years of IT experience, and he has experience in project management and graphic design as well. He has conducted several IT-related workshops in India and Kuwait for hundreds of students. He has extensive experience in media related softwares like Photoshop, Illustrator, Premiere, and InDesign. Currently, he is working as media and public relation officer in oil company in Kuwait. Thank you, Jafar sir, for being our mentor and teacher for this course. You're welcome. Next trainer is Brother Naveed Riaz Ahmed Kusugal. I request him to please turn on his camera. Mr. Naveed is from Hubli, Karnataka, India. He has MTech degree in computer science and engineering. He is living in Kuwait since 5 years, and he has more than 10 years of experience in information technology and software development. He has experience in artificial intelligence, project management, and training. He has conducted several IT-related workshops in different programming languages, artificial intelligence, machine learning, network security, cybersecurity. Currently, he is working as project coordinator in Kuwait Digital Agency, which is an IT company in Kuwait. Thank you, Brother Naveed, for being our mentor and teacher for this course. You are on mute. Thank you for inviting me. Yes. So next step is like we will start with the course. Before that, I'd request Jafar sir and Naveed sir as well that if they want to give any instructions before we begin with our course, if they have any instructions, they can give to the participants and students. Thank you, Brother Asim. Assalamu alaikum, everyone. I'm really honored to be part of this whole workshop. I think YouthWing is conducting this workshop for the second time. During Corona time also, we did this exercise. And we are very happy that more than 700 to 800 people signed up for this course. This is indeed, it shows that this carries a lot of weightage and a lot of requirement is there for such courses. So I really thank IMA YouthWing for taking up this free online course. May Allah bless you all, the whole team of YouthWing for organizing this course. Moving on to the details of this course. First of all, I request everyone to always keep the mic and camera off. Since we are more than 300 people, it becomes very difficult to communicate with such a large audience. So what we're going to do is the ground rule of this course will be, most of the time you will be in mute and you will switch off the cameras, and our host
they will enable and disable the mute and unmuting thing whenever it is required for the communication. What we do is, like, the pattern what we have adopted is, we will, me and Mr. Naveed, we will be co-hosting the whole course. I will take some of the modules, and Mr. Naveed also will take some of the modules moving forward. So during the classes, what we're going to do is, we will explain one concept for like maybe 10-15 minutes. For example, how to do the data entry in Excel. So after we explain, immediately we will give you the like a short work for a practical thing, so that you practice then and there, and then you show us. So the practice, what we're going to do is, as soon as we finish one module, we will tell you to do something. So make sure you are sitting in front of a computer, not on a mobile device. Even if you are attending on a mobile device, it's very difficult to see the detail, the what you call the toolbars and icons, all these things. It is very difficult to comprehend. So if you can log in with the laptop or a PC, it will be good. So try to log in from a PC or a laptop, and then when we give you the task to work, then and there only you will open the Excel sheet and you will finish the task, and you will take a picture of what you have finished. For example, if I tell you to create a table with certain amount of rows and certain amount of column, you will do it quickly, and then you will, from your mobile, you will take a picture of the screen, then you will share it in the WhatsApp group. So in this way, we will make sure that as we progress, we know that you are also learning in the meantime. So this will be our basic rule for the whole course. Inshallah, today our focus will be just to give you a orientation of what exactly the concept of data is, the tables. Jafar sir, sorry for interrupting. Yes. प्लीज हिंदी इंग्लिश भी हिंदी और उर्दू भी यूज कीजिए, क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है जी इंडिया से भी है, जो मिक्स हो करेंगे। सकता है कि जी जी नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह। तो हम लोग आज का जो क्लास का जो मेन फोकस रहेगा वो ये है कि ये जो डेटा हम लोग एक्सेल में जो हम लोग डेटा इस्तेमाल करते हैं, टेबल एंड रोस एंड कॉलम, इसकी अहमियत क्या है, और ये जो फील्ड जो है, इसको हम लोग डेटा साइंस का जो फील्ड बोलते हैं, इसका स्कोप क्या है, एंड यहाँ आप एक्सेल सीखने के बाद नेक्स्ट फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, और एक्सेल सीखने के बाद आप ऑफिस में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो इन चीज़ों को आज हम लोग शुरू करेंगे, एंड देन वी विल टेक वन बाय वन, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, इंशाल्लाह। सो we will begin with today's today mostly it will be theoretical thing. You don't need to worry about like ये क्या deep इतने subjects deep बता रहे हैं करके. Our focus of today's session is give you a overall comprehensive information about spreadsheet के softwares जो रहते हैं, Excel है, और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, just to give you a overall overview of these products, and then what are the products and which product is specialized in which work, we will see inshallah. So let me share the screen. Please confirm if you can see the screens. You can confirm by Yes. like thumbs up or something from the chat. Okay, great. Okay, so we will start. So today's main focus will be the introduction to data science. For example, there is a concept these days called data-driven decision making. आजकल एक concept
इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो रहा है, जिसको हम लोग डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कहते हैं। थोड़े लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं अपनी होस्ट टीम को मैं गुजारिश करता हूं कि जो वो फीचर है उसको डिसेबल कर सकते हैं आप, वो डिसेबल करिए। इट विल बी डिस्टर्बेंस फॉर अदर्स एज वेल। And whoever is doing, you can block the user so that like they don't disturb in future. I try to identify the users and okay. So I was talking about data-driven decision making. There is a concept called data-driven decision making. It is a concept, it is an approach where making informed choices based on data analysis and interpretation. It involves collecting, analyzing, and interpreting relevant data. इसका मतलब क्या है कि चंद डिसीजन लेने के लिए आपके पास अगर एनफ डेटा है तो आप उस डिसीजन को एक बेहतर अंदाज से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये स्लाइड में मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो डेटा रहता है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और डेटा को सिस्टमैटिकली आप अगर स्टोर करेंगे तो उससे कितना फायदा उठा सकते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। I will give you a small example of data-driven decision making. For example, there is a very famous business house called Walmart. आप तमाम लोग सुने होंगे, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में ये वॉलमार्ट बहुत फेमस है। यहाँ पे जैसे आप लूलू हाइपर मार्केट वगैरह देखते हैं, वैसे वॉलमार्ट है। ये लोग अपना डेटा को सिस्टमैटिकली ये सेव करके एनालाइज करते हैं कि पिछले फॉर एग्जांपल 4-5 साल में जो है वो ऐसे क्या सीजन्स हैं और ऐसे क्या चीज़ें हैं जहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो सेल जो है बहुत ज़्यादा होता है। इन लोगों ने एक डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि स्पेशली जब भी अमेरिका में आप लोगों को तमाम को मालूम है कि हरिकेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे तूफान जो साइक्लोन जो है वो सीजनल आते रहते हैं। जब हरिकेन आता है तो पूरा डेडलॉक हो जाता है, वो लोग स्कूल को छुट्टी, बिजनेसेस को छुट्टी, घर में बैठना पड़ता है। तो वॉलमार्ट ने अपना डेटा पिछले पूरे हिस्टोरिकल डेटा को ये लोगों ने एनालाइज करके देखा कि जब भी हरिकेन आता है तो उनके पास जो छोटे मोटे जो खाने के जो चीज़ें रहते हैं, फॉर एग्जांपल चिप्स हैं, चिप्स के रिलेटेड जो घर में बैठ के जो टाइम पास करने का जो चीज़ें रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होता है। So this is what they realized by analyzing the old data. So what they did, look at the way companies they use data, how they analyze the data. Just observe Walmart what they did. They just checked for the weather report के हरिकन ये पर्टिकुलर सिटी में कब आ रहा है करके वो वेदर रिपोर्ट में देखेंगे। When they know के पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम में जो आ रहा है तो उस गांव के सब वॉलमार्ट के शॉपिंग सेंटर्स में चिप्स और ये जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एकदम हाईलाइट करके वो सामने काउंटर के सामने ये लोग सेल में रखेंगे। एंड दे हैव came to the conclusion that the sale of that product 4 times increased by doing this exercise. So this is the power of डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। उनके पास डेटा था, उसीलिए दे वर एबल टू कन्वर्ट द डेटा इनटू वेरी प्रॉफिटेबल एंड वेरी स्मार्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच। I will give you another example. You all must have know about Prashant Kishore. He is a very famous political consultant and tactician in India. He gives like consultants to political parties. So his success formula is that he collects the data of individual constituencies.
वहां पे जो पिछले फॉर एग्जांपल 40 साल 50 साल से जो चीजें चले आ रहे हैं उसको ये लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोगों को ये कौन से पार्टी को वोट देते हैं एंड हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम लोग जानते हैं कि स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको बोलते हैं, जहां पे एज टू एज रिजल्ट रहता है। फॉर एग्जांपल if we have BJP and Congress competing in one particular constituency, एक पार्टी को 48%, एक पार्टी को 47% आता है, बाकी का जो बचा बचा रहता है वो थर्ड जो छोटी मोटी पार्टी रहती है उसको मिलता है। तो दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर कॉल्ड swing constituencies. So what people like Prashant Kishore they do, they study the data, ये कहाँ कहाँ पे कितने लोग वोटर्स हैं, कितने लोगों का क्या इमोशनल एस्पेक्ट है एंड व्हाट दे आर इंटेंस टू, उनका जो डिसीजन मेकिंग में क्या ज्यादा ये है वो स्टडी करते हैं। बेस्ड ऑन दिस स्टडी उनके पास जो डेटा रहता है पिछले 50-60 साल का, दे गिव कंसल्टेंसी टू पर्टिकुलर पार्टी। जैसे ये अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आपको जीतना है तो आपको 1 2 3 करना पड़ेगा, ऐसे मुद्दे उठाना पड़ेगा, आपको इतने लोगों को आप अपीस करना पड़ेगा। देन व्हेन द पार्टी फॉलोज दिस थिंग, दे मोस्टली, आई मीन इसमें देखा गया है कि प्रशांत किशोर was a very successful political consultant, so he has given a very good the concluding factor is that when you have a data of anything, it could be Walmart information or it could be political information, you can make a better decision with the help of data. Now मैं आपको और आसान अंदाज से अगर मैं आपको बताऊं, अगर वालमार्ट और पॉलिटिकल ये बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, तो इफ़ आई वांट टू एक्सप्लेन इट इन अ मोर वेरी डाउन टू अर्थ एग्जांपल, अगर I have seen lot of females joining in this course, so mostly they are worried about घर में जो खर्चे होते हैं, हर महीना एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेविंग नहीं हो रही, जितना सैलरी आती है उतना खर्चे हो जाते हैं करके। सो व्हाट यू कैन डू इज यू क्रिएट एन एक्सेल शीट विथ डेटा। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कर सकते हैं कि एक एक्सेल शीट में यू स्टार्ट इनपुटिंग रेगुलरली एवरी डे टू डे बेसिस में कि आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। सैलरी मिलने के बाद आप क्या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके अलावा भी आप पैसे खर्च कर रहे हैं। आर यू वेस्टिंग मनी इन द डिनर और जो पार्टीज होते हैं बाहर खाना खाना, या कभी 50% सेल देख लिया तो आप चले गए 40-50 दिनार का शॉपिंग कर लिए। तो इन चीज़ों को अगर इफ़ यू स्टार्ट इनपुटिंग इन एक्सेल शीट एंड कैटेगराइज दिस डेटा के ये डेटा कहाँ पे कितना ये हो रहा है, our IT team please annotate को उसको disable करिए। I know some people are just wasting their time attending this event. I think you need to reshare the screen, and or I think you can stop the annotation while sharing. 1 second. Clear all drawing. Okay. So and also keep watch on the users. जो users वो ऐसा करते हैं उनको right click करके block करिए so that they don't attend the whole class. उसके बाद this is what I was giving the example of housewives, how they can monitor their day-to-day expenses, and at the end of the month when they see के हाँ we are wasting so much money on डिनर बाहर जो करते हैं उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो you can analyze your expenses and plan better way. You think that like
अनफोर्स लाइक अनप्लान्ड जो शॉपिंग होती है, कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, अगर व्हेन यू नो योर डेटा, यू कंपेयर के पिछले 1 साल का मैं डेटा अगर मैं सेव करते आ रहा हूँ, व्हेन यू सी के आई हैव बीन वेस्टिंग एवरी मंथ सर्टेन अमाउंट ऑफ माय सैलरी ऑन जस्ट अनवांटेड अनइम्पोर्टेंट आइटम्स, देन यू नो के हाउ टू सेव. वहां पे the big chunk of your money can be saved on a very purposeful and meaningful activities. So this is the power of data. So this is called data driven decision making. Hope you guys understood this concept. So Excel is just one tool to use to analyze and to collect, analyze, interpret the relevant data. Moving on, giving more examples of how companies use this DDM, data-driven decision-making, real examples. One beautiful example is that of there is a hotel chain called Red Roof Inn. So what they have done, they analyzed the past like several years data of airports. Airport में जब भी फ्लाइट कैंसिल होता है तो ये फ्लाइट कैंसलेशन का डेटा ये लोग एनालाइज किए, एंड दे फाउंड कि जब भी फ्लाइट कैंसिल होता है तो व्हाट फर्स्ट थिंग पीपल डू, they try to see a hotel in and around the airport, whichever mostly people look for a cheaper option, क्योंकि एक दिन डिले हो गई, 2 दिन डिले हो गई तो कैंसिल हो गई फ्लाइट, तो दे सी in and around thing. So what Red Roof Inn they did, they try to find out कि वेदर कब खराब हो रहा है. जब वो वेदर खराब होता है तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ कैंसलेशन ऑफ फ्लाइट्स आर देयर इन पर्टिकुलर एयरपोर्ट्स. सो उन एयरपोर्ट्स को ये लोगों ने टारगेट करने के बाद दे स्टार्टेड हैविंग होटल्स in the nearby those airports. So based on the data, they say that Red Roof Inn is one of the successful economical hotel chain in America. This was possible only because they had good amount of data to analyze, systematically use it. Similarly, Netflix जो ये है जो स्ट्रीमिंग सर्विस है, दे आल्सो सी के ऑल द यूजर्स what kind of web series, what kind of viral content people like. So when they analyze like 4 million subscriber ratings, they find out that like particular category of people, they like particular category of series. So they fund producers to create movies and web series which are in favor for the users. Similarly, आप सबको मालूम होगा कि गूगल जो है वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा इनके पास, गूगल के पास है. आप शायद आप महसूस भी करे होंगे कि अगर आप 2-3 फ्रेंड्स के साथ अगर आप बोल रहे हैं कि मैं एयर टिकट बुक करना है, ऐसे ही आप बात कर रहे हैं कहीं दोस्तों के साथ, then you will immediately start getting air ticket related ads in your Gmail, in your Facebook. So this ad thing is possible with the amount of data you have. Similarly, Uber hai. Uber, they collect the data of millions of riders and see which pickup location is very famous and what time. सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक लोग जो ऑफिस को जाते हैं, उस टाइम पे जो है इस पर्टिकुलर एरिया में जो है डेटा ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो दे arrange lot of cars in particular area. So this is possible only if you have data. So similarly, ये जो डेटा एनालिसिस जो करते हैं लोग, वो जो डेटा एनालिसिस जो करते हैं उनको जो है डेटा एनालिस्ट कहा जाता है. ये जो डेटा एनालिसिस का जो पोजीशन है, it is like nowadays it has become a very popular feature for other jobs.
in this data science industry. Data analyst offers, like, they collect the data, they categorize the whole data in a very systematic way, and then they present it in a beautiful way. For example, डेटा विजुअलाइजेशन टूल इस्तेमाल करते हुए ये डेटा एनालिस्ट दे इम्प्रूव ऑपरेशंस, इंक्रीज रेवेन्यू एंड हेल्प द बिजनेसेस टू रन देयर बिजनेस वेरी स्मूथली. मैंने एग्जांपल भी दिया कि वालमार्ट का जो एनालिसिस का जो ये है, दैट वाज पॉसिबल only with the help of a systematic data collection. So learning data science is comparable to a data analyst in the both rely on a training in computer programming languages such as Python और SQL. लेकिन उससे पहले जो है the foundation जो रहेगा वो solid foundation जो है Microsoft Excel. This is where I am coming towards. आप सोच रहे होंगे कि एक सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स में इतना डीप सब्जेक्ट क्यों सिखा रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर. जब आप ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप अच्छी तरह सीख लेंगे, उसके इन एंड आउट्स, उसके जो डीप एडवांस टेक्निक्स को अगर आप समझेंगे, then you can change your career to a data analyst. It's a very well paid job, and the good part about the data analyst job is, like, you can sit anywhere in the world and you can work for any big corporations. You don't need to go and stay with them. I have a cousin who is a data analyst. He works for a big corporation, and I have seen since 5-6 years he have not gone to office. He sits at home, he analyzes the data, and he reports the data analysis to his boss. So that's what he does. So this field is a very interesting and challenging field. Microsoft Excel is a foundation for these kind of data analysis. Then data analysis, where else can be used? Data analysis can be used in environmental sciences, like to read about climate change modeling. Education field mein, I heard that there are a lot of teachers in today's attendees. So you can use education Excel in educational field to personalize the learning of kids, to save the data of your kids' performance and analyze. For example, one ABC kid is performing continuously for example, for 11 months. You can see his progress from data. When you have data, you can see his progress. He is whether he is improving, not improving, he is dull in particular subject. So you can focus on that particular subject. This is only possible when you have systematic and clean data with you. Similarly, this data science can be used in human resources, talent acquisition and retention, communication, telecommunication में बहुत ज़्यादा work होता है. Crime prevention, you can predict policing, you can do study of crime, कहाँ पे कितने वक्त में crime ज़्यादा होता है, तो you can take action accordingly. Agriculture में precision farming, weather pattern को समझते हुए, if you read the for example past 50 years weather data, then you know कि ये particular season में particular day में ऐसा season रहता है, तो you can plan your agricultural activity accordingly. Social media sentiment को भी जो है ये काम आता है. Moving forward, this is just a screenshot of today's job availability of data science in Kuwait. It is only in Kuwait. See so many data scientists, data analysts, senior data scientist, data analytics, data scientist everywhere. Companies like Uridu, companies like Al Ghanim, they all have this kind of opening. So Microsoft Excel is like a gateway to all these kind of jobs in the industry. When you master MS Excel, then you can learn with the help of if you do couple of courses like Python and programming languages, then
you are like ready for a data science career. So that was about the data science and data analytic field. And coming back to our Microsoft Excel course, before we really getting into the Microsoft Excel, first we will see what exactly Microsoft Office is. Microsoft is a IT company. It's a very well-known IT company. They have a productivity software package called Microsoft Office. So Microsoft Office has Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS Team, Access, OneNote. All these applications, they are called Microsoft Office. So basically, all these tools are productivity tools. You can use these tools to you do analysis, data storing, everything in your office and outside office thing. So MS Excel is one of the Microsoft Office software where we can use Microsoft MS Excel to mine the data. You store the data, analyze the data, and you present the data in a most informative way possible. सबसे पहले क्या करना है, एक्सेल में आप डेटा को स्टोर करेंगे. आइदर इट कैन बी लाइक डेटा एंट्री करके मैन्युअल करेंगे, या यू विल एक्सपोर्ट द डेटा फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस. उसको क्लीन करेंगे. Clean in the sense you will arrange the data in a most meaningful way. And third thing is you can use analytical tools to present your data in a most beautiful way. And moving forward, we will see what all things we can do in the MS Excel. As we know, MS Word is for the typing letters and documentation. PowerPoint is to presentation. Outlook, MS Outlook is for the email and things like that, communication tool. MS Team is where you communicate with your office colleagues. MS Access is a database driven application wherein you can store the data on a very large scale. OneNote can be used for multi-purpose to track, small notes you can store. So all together is called Microsoft Office, and Microsoft Excel is one part of the Microsoft Office package. So Microsoft Office, these applications are widely used in various industries and educational institutions. For example, document creation, data analytics, communication, collaboration, ये सब जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं. So Microsoft, in order to have MS Excel, you need to have one of the two licenses. Either you will go for Microsoft Office Windows license, or there is something called a subscription-based license on a Microsoft 365. This is like a cloud-based application. So both the ways, the first one is like a proper software you install in the computer. The second way is the software which is available on the cloud, and you store all your files on the cloud and access on the way, on the run. Office में check कर सकते हैं, घर में check कर सकते हैं, wherever you want, you can check. So this is like a overall information about Microsoft Office package. So let's try to understand what exactly Microsoft Excel or Microsoft Excel किस category में आता है करके. There are several spreadsheet software application available. So as we said, Microsoft Excel is a spreadsheet software. तो spreadsheet का मतलब क्या है? When you have rows and columns in a table, so those kind of softwares are called spreadsheet softwares. जहाँ पे आपको कॉलम रहेगा, रो रहेगा, उस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स जो इंडस्ट्री में मिलते हैं उसको हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं.
Spreadsheet का मतलब ये है कि it will be full of rows and columns and cells. When we talk about Microsoft Word, आपको एक वाइट कलर का एक कैनवस ओपन करके दे देंगे, वहां पे आप टाइप कर सकते हैं, आप क्या कुछ भी कर सकते हैं. MS Excel, since it is a spreadsheet software, it has rows and columns, and you will do the data entry in the rows and columns. So that is the definition of spreadsheet softwares. So in the IT industry, we can see three major, like a very popular spreadsheet applications. One is, of course, Microsoft Excel is by far the most popular Microsoft, spreadsheet software. Very popular, very commonly used application. But meantime, nowadays, people also started using Google Sheet. Google Sheet also is one type of spreadsheet software, which is very, very similar to Microsoft Excel. You can 90% you can do anything, whatever you are doing in Microsoft Excel, that can be done in Google Sheet also. But what is the difference between Excel and Google Sheet? Google Sheet is a web-based spreadsheet application. That means you don't need to install any software in your computer. You just go to doc.google.com and you start using the spreadsheet application. And one more advantage of Google Sheet is it is available everywhere. Like आप घर में बैठ के आप फ्री हैं तो कुछ काम करते रहें, उसको सेव करके बंद कर दिए. You go to your office, you can open the same file from your office also. Same file everywhere you can operate. MS Excel में अगर if it is saved in your computer, you need to come back to the same computer to open the software and do the work. It will not be available everywhere unless you have saved that file in a cloud server. Similarly, from Mac, Apple computers, there is similar application called Apple Numbers. So this is also one of the spreadsheet software which does similar work what Microsoft Excel can do. So in a way, most popular are these three spreadsheet applications, and Microsoft Excel is one of the commonly used spreadsheet software. And inshallah we will try, हम लोग कोशिश करेंगे कि जब हम लोग Microsoft Excel खत्म करेंगे, when we finish the course, we will take 1 or 2 classes to teach you about Google Sheet also. This is very handy, and we should also learn Google Sheet for a very faster and seamless working style, inshallah. यहाँ पे Microsoft Excel जो यूज कर रहे हैं, Microsoft Excel यूज करके क्या डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे. I'm very sorry because I'm going continuously on our modules. Ideally क्या होता है कि अगर जो पार्टिसिपेंट हैं अगर वो कम क्वांटिटी के रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 30-40 पार्टिसिपेंट हैं तो I would have stopped in between and I would have asked you some of questions, cross question to make sure that you understand the concept. Now, since it is a very large group, if we open up for a thing, it is very difficult to analyze. So at the end of the class, we will open up for like a 10 minutes question answer session. That time we will try to clear your doubts, inshallah. Just bear with me until we cover a basic foundation of data analysis and introduction to Microsoft Excel. So coming back to the subject, I said the data-driven decision-making मैंने जो दिखाया DDDM, तो उसमें जो है Microsoft Excel is one of the software which can be used to, यहाँ पे आप पढ़िए, data analysis using Microsoft Excel involves
using the various features and functions within Excel to, this is very important, just focus with me, to interpret, organize, and make sense of large set of data. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए आप आपके लार्ज डेटा को इंटरप्रेट, ऑर्गेनाइज और उसको एक समझने के लैंग्वेज में आप प्रेजेंट करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डेटा एनालिसिस में तीन जो मेन जो हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि डेटा इंपोर्ट एंड डेटा एंट्री। सबसे पहले इन ऑर्डर टू एनालाइज द डेटा यू शुड हैव ए डेटा। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि यू विल डेटा आइदर यू डेटा एंट्री मैन्युअली करेंगे और यू इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। वो दोनों भी हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे कि हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटाबेसेस, टेक्स्ट फाइल्स और अदर स्प्रेडशीट, और हाउ टू डू द मैनुअल डेटा एंट्री, वो भी हम लोग फ्यूचर क्लासेस में हम लोग देखेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेटा एनालिसिस, ये है कि यू शुड हैव ए डेटा इंपोर्ट एंड डेटा एंट्री प्रोसेस। सेकंड, डेटा आपको हाथ में मिलने के बाद आप वो डेटा को जो है क्लीन करना चाहिए। Before analytics, it's crucial to clean and prepare the data in a very meaningful way. This involves removing duplicates of data entry, handling missing values, and formatting the data into a appropriately. For example, data, if you're collecting the data from here and there, एक दो तीन लोकेशन से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एंड यू फाउंड आउट के जो डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है, कोई मंथ पहले डाला है, बाद में डे डाला है, बाद में ईयर डाला है, और कोई डे पहले डाला है, मंथ पहले डाला, बाद में डाला है। So this is called formatting the data appropriately. Okay, you clean the data with proper thing. So with the help of Microsoft Excel, you can clean the data very easily. And the third and a very important the stage of data analysis is आप फार्मूला और फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए आप डेटा को एक कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलास लाइक सम, एवरेज, काउंट। ये चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए यू कैन कम टू ए वेरी मीनिंगफुल comprehensive data after the cleaning and the data entry process. So with the help of Microsoft Excel, you will be able to do all of this in a very systematic and meaningful way. उसके बाद आप डेटा क्लीन करने के बाद और फंक्शंस वगैरह लिखने के बाद, आप फार्मूला लिखने के बाद, आप नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यू कैन सॉर्ट एंड फिल्टर योर डेटा। फॉर एग्जांपल, सॉर्टिंग द डेटा के आई वांट टू सॉर्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन। नाउ assume that I have a data related to Kuwait, the people who are living in Salmiya, people who are living in Farvania, Havali, then I want to group all the people who live in Salmiya. So that is called sorting. Filtering जो है Salmiya में जो है, I do the sorting of Salmiya people, then I want to filter only male and female in Salmiya, living in Salmiya. वो भी जो है आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग आल्सो कैन बी डन वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सिमिलरली, चार्ट एंड ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए यू कैन प्रेजेंट योर डेटा इन ए वेरी मोस्ट मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुल वे। I will show you some of the sample of how we can do it with the help of charts. उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा एनालिसिस के लिए पिवोट टेबल्स एंड पिवोट चार्ट्स करके वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पावरफुल फीचर्स आर देयर।
With the help of this, you can analyze the data. You can take data from 2-3 tables and you can show it in a very meaningful way. And also, Excel provides some of the features like conditional formatting. तो conditional formatting इस्तेमाल करते हुए आप, for example, any danger sign of your data, उसको आप highlight करना चाह रहे हैं, you can make it as it should highlighted in red color. So those kind of data you can conditionally you can format in such a way. अगर मेरा data, for example, I want to find out people who are above 80 years. So Salmia में people whose age are above 80 years, I want to make all those people in red color. That is called conditional formatting. So those things can be done with the help of Excel. This is just, I'm giving you an overview of what can be done with the help of Excel. More on each of the subject, we will, हम लोग हो सकता है कि sorting and filtering को एक full class ले in future, inshallah. Today, I am just giving you a brief like overview of like Excel में क्या-क्या features हैं, what can be used to achieve those features. So practical application अगर बोला जाए, Microsoft Excel practically कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है. As I said, a lot of half of the attendees are females. So इससे पहले भी मैंने एक स्लाइड में बताया कि you can monitor your monthly expenses of how your grocery, आप ग्रोसरी के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, आप अनवांटेड जो परचेसेस को कितना आप पैसे खर्च कर रहे हैं, एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग ऑन योर किड्स, how much you're spending on the house decoration thing, how much you're spending from your salary on a transportation, petrol को कितना खर्च कर रहे हैं. When you start inputting these data every day, at the end of the month, you will get a beautiful representation of your data in a ग्राफ में वो दिखाता है कि अगर समझिए कि रेंट का जो ग्राफ है, अगर बहुत बड़ा ज्यादा ग्राफ दिखा रहा है, दैट मींस यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ योर सैलरी ऑन ए बिग हाउस. अगर डिनर इन द रेस्टोरेंट्स के कॉलम में अगर ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं, तो उसमें पता चलेगा कि हाँ, यू आर वेस्टिंग सो मच मनी ऑन आउटसाइड होटल रेस्टोरेंट फूड. So this is a practical application where you can utilize Microsoft Excel to analyze your personal expenses data. This is a small example I gave. Similarly, बिजनेस एंड फाइनेंसेस इंडस्ट्री में आप बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग के लिए कर सकते हैं, कैश फ्लो ऑफ ए मैनेजमेंट, कंपनी में जो कैश फ्लो होता है उसको मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पेरोल एम्प्लॉय, अगर इफ योर कंपनी इज हैविंग 50-60 पीपल एम्प्लॉयज, you can easily keep track of payroll with the help of Microsoft Excel. Project management बहुत अच्छा कर सकते हैं Excel में. You can track task and project planning. इसको चार्ट वगैरह बना के इसको टाइमलाइन बना सकते हैं, रिसोर्सेस को मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सिमिलरली एजुकेशन फील्ड में जो है ग्रेड देने के लिए, so many teachers are attending today, so you can use Microsoft Excel to give grades and grade tracking. बच्चों का जो एग्जाम्स होते हैं, जो ये होते हैं, तो you can keep track of grading. ग्रेड देना है, for example, you can write a formula, whoever received more than 80% marks, they will be considered as distinction. तो एक फार्मूला लिख के अगर आप वो फार्मूला को पूरा खींचेंगे, विद इन सेकेंड you can find how many students are having distinction mark, how many students are failed, how many students are in between 40 to 50%. ये जो डेटा एनालिसिस है स्कूल में बच्चों का, that is called students performance analysis. ये सब बहुत आसानी से कर सकते हैं. And moving forward,
इंशाल्लाह वी विल टेक अप रियल वर्ल्ड सैंपल्स। तो एक सेशन हो सकता है कि हम लोग बच्चों का ग्रेडिंग सिस्टम कैसा कर सकते हैं उसको हम लोग एज ए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे, एंड यू विल पैरेलली यू विल डू to learn along with us. Similarly, in the research field also, the Microsoft Excel use data collect करके organizations का उसको analysis करने के बाद बोल सकते हैं कि वेदर डेटा, अगर आप 50 साल का डेटा अगर लेके देखें कि इस महीने में इतने ये इसमें these people वेदर फोरकास्ट कैसे करते हैं, पास्ट डेटा को रियलाइज करके दे लर्न, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, then they analyze. Similarly, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी आप सेल्स ट्रैकिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कस्टमर रिलेशन जो सीआरएम बोलते हैं, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, एक छोटा सा सीआरएम एप्लीकेशन बना सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। मार्केटिंग कैंपेन का एनालिसिस कर सकते हैं आप। लीड ट्रैकिंग, आपको कितने लीड आ रहे हैं और वो कितने कन्वर्ट हो रहे हैं एज ए रियल प्रोजेक्ट, इसको ट्रैक करने के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शोएब भैया, टिल व्हाट टाइम वी हैव, जस्ट रिमाइंड मी। आई एम मूविंग ऑन विथ माय Yeah, this is our first day. We can go for the 1.5 hour. Okay. So next, this is just an example I'm showing you. As I told, like household budget का जो मैंने जिक्र किया, इसमें आप ये स्क्रीन में देखिए कि आपके पास बजट मॉनिटर, फॉर एग्जांपल जनवरी के महीने में आपको इनकम, आपके इनकम सैलरी वन, अगर आपके घर में 2 लोग कमाने वाले हैं तो सैलरी 1 और सैलरी 2 आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन लेट मी अनोटेट एंड आई शो यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये जो है आपका इनकम है, इनकम को आप सैलरी 1 सैलरी 2 करके इतना इनकम आ रहा है। अगर आपके पास कोई बोनस आना है या अदर पार्ट टाइम आप कर रहे हैं तो सब मिला के आपका बजट इतना बन रहा है। और होम एक्सपेंसेस, आप रेंट को कितना खर्च कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल कितना दे रहे हैं, इंटरनेट का बिल कितना है, टेलीफोन का बिल कितना खर्च कर रहे हैं, ये सब आप डेटा इनपुट करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, डेली लिविंग, मिसलेनियस, सेविंग्स कितना हो रहा है, ये सब करने के बाद आप इधर राइट साइड स्क्रीन में देखिए कि यहाँ पे वो दिखाएगा कि आपके पास सेविंग का क्या सूरत हाल है। एग्जाम्पल यहाँ पे ये एरिया में देखिए कि आपको सेविंग कितना हो रहा है, आपका टोटल इनकम क्या है, आप कितने एंटरटेनमेंट में कितना खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, पर्सनल एक्सपेंसेस कितना खर्च कर रहे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, हाउ मच एवरी मंथ यू आर स्पेंडिंग। ये जो है ये ब्यूटीफुली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं व्हेन यू हैव ए क्लीन नीट डेटा। ये डेटा एंट्री है लेफ्ट साइड में एरिया में आप करेंगे, राइट साइड में आप ग्राफ डालने के बाद उसको बहुत एक अच्छे अंदाज से उसको समझने की कोशिश कर सकते। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर द सिंपल मंथली हाउस होल्ड बजट। नेक्स्ट जो है, फॉर एग्जांपल एक कार शोरूम है और उनके जो सेल्स एनालाइज करना है कि उनके पास जो कार सेल हो रहे हैं उसमें कौन से वाले ब्रांड जो है सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इफ यू सी द चार्ट, इट इज वेरी इजीली अंडरस्टूड के मारुति जो ब्लू कलर में जो आ रहा है, इट हैज 43% ऑफ सेल्स, and Hyundai, it has 14% of sale. When you look at the first glance, easily you can tell के कौन से brand कौन से कितना successfully ये हो रहा है। This is only possible when you have data with you. ठीक है, डेटा जब रहेगा आपके पास तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत आसानी से वेरी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन अचीव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सिमिलरली आप डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। डैशबोर्ड किसको बोलते हैं? डैशबोर्ड एक ऐसी चीज है कि इफ यू हैव like 10-15 different tables,
वो टेबल से डेटा उठा के आप एक स्क्रीन में आप हर डेटा को मोस्ट ब्यूटीफुली एनालिटिकली स्टैटिस्टिक को बता सकते हैं कि आपके कंपनी में सेल क्या हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर है, कौन से कंट्री में ज्यादा हो रहा है, एंड यू विल अंडरस्टैंड। दिस इज कॉल्ड डैशबोर्ड। क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स सीख रहे हैं, यू शुड रिमेम्बर के डैशबोर्ड का मतलब क्या है, डैशबोर्ड का पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल, आप आपके मैनेजमेंट को आपको प्रेजेंटेशन देना है कि वो ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ हाउ मच सेल्स हैपन, तो आप टेबल में जाके डेटा नहीं दिखाएंगे आपके मैनेजर को और आपके सीईओ को। आपके सीईओ को ये डैशबोर्ड दिखा देंगे कि टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ, टोटल आइटम सोल्ड हाउ मच, हाउ मेनी मिलियंस और प्रॉफिट। ये बस लास्ट फाइनल फिगर दिखाएंगे तो ही विल बी वेरी हैप्पी। He is not interested in the nitty-gritty of table values, column, rows. He will not be having so much time. आप सिर्फ डैशबोर्ड के अंदाज में अगर आप डेटा दिखाएंगे तो दिस इज अ मोर friendly, user friendly and most easy to understand way of analyzing the data. Similarly, this is also an example of डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा को इस्तेमाल करके आई टोल्ड यू के कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैंने एग्जांपल दिया कि अगर एक डेटा बहुत ज्यादा है तो उसको हम लोग रेड कलर में कलरफुल दिखा सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ Microsoft Excel. This is also one of the example of dashboard. Inshallah, we will all create this at the end of our course. We will be able to create these kind of dashboards, inshallah, and you will also do it with us. This is one example of how you can have table and column in the chart in the Microsoft Excel, and related chart can be like this. For example, this data is analyzing के कौन सा वाला फूड जो है it is most ज्यादा सेल हो रहा है, accordingly the total revenue कितना हो रहा है, कौन सा ये पॉपुलर है वो दिखा रहा है यहाँ पे। So this is one example of representation of data. This is महेंद्र सिंह धोनी का जो टेस्ट क्रिकेट का बैटिंग करियर है वो इट इज शोइंग अगेंस्ट ईयर 2005 से लेके 2012 तक जो उसने बैटिंग किया है। यू कैन इजीली एनालाइज के वो विच मैचेस ही प्लेड वेल, विच ईयर ही इज वेरी डल। फॉर एग्जांपल 2011 एंड ऑल, in between 2011 and 2012 he is very like on off है उसका performance. So with the help of Microsoft Excel you can analyze data in a more beautiful way. This is also one example of analyzing the data. कर्नाटक असेंबली इलेक्शन का जो वोट शेयर टर्नओवर है वो it is shared between 3 major parties, कांग्रेस, बीजेपी एंड जेडीएस। उसमें आपको एक पाई चार्ट में बहुत आसान तरीके से ये दिखा देता है कि किसको कितना वोट मिला और कहाँ पे वोट शेयर ये हुआ है। सो दे आर एग्जांपल ऑफ beautiful representation of the data. Talking about the overall course outline, हम लोग जो Microsoft Excel का जो कोर्स हम लोग करेंगे उसमें इन मेन चीज़ों को we will go in detail with the practical. हर क्लास में हम लोग we will spend some time to explain and give you example of how exactly things work. For example, if we Microsoft इंट्रोडक्शन टू एक्सेल आज का ये हो गया। नेक्स्ट क्लास जो है वर्किंग विथ वर्कशीट, इंशाल्लाह ब्रदर नवीद आल्सो विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट के वर्किंग विथ वर्कशीट्स कैसा कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। डेटा एंट्री कैसा करना है वो देखेंगे। बेसिक फार्मूला एंड फंक्शंस, सेल रेफरेंसेस, कॉलम्स, डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कैसा करना है, चार्ट्स और ग्राफ्स कैसा बनाना है, डेटा वैलिडेशन करना कैसा है, पिवोट टेबल्स, बेसिक डेटा एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू मैक्रोस, कोलैबोरेशन कैसा कर सकते हैं हम लोग, प्रिंटिंग एंड पेज लेआउट को कैसा हम लोग मैनेज करेंगे,
and finally tips and tricks to do the thing very quickly. So in सारे चीजों को हम लोग with a period of I think 2 months we will inshallah try to understand this concept. Our the technique will be, we will start with a real world application project. एक project का scenario लेते हैं and then we will start one by one data entry से लेके last beautiful and representation in a form of chart. हम लोग एक project को लेके उसको implement करने की हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. So this was about the introduction to Microsoft Excel, and then little bit of data mining, data analytical field में जो होता है उसको मैंने आपके सामने रखा. इन चीज़ों के बारे में अगर आपको if you have any doubts, we will open up the floor for like 5-10 minutes. You can raise your hand and we will take one by one questions if you have. Make sure the question should be related to the subject what we discussed today. Rihan Ansari, you can ask question. Host, please take care of muting, unmuting. Mohammad Rihan Ansari, you can unmute. अनम्यूट करके आप सवाल करिए. शहनाज बहन को भी मैंने अनम्यूट कर दिया. यू कैन अनम्यूट एंड टॉक. आवाज नहीं आ रही है. Hello? हाँ अब आ रही है. आप पूछ सकते हैं बहन. यू कैन आस्क Yeah. क्वेश्चन. Yeah, I had one question. Do we have access to this presentation? Of course, we will share it in the group, inshallah. Okay, thank you. You're welcome. Najib Ahmed, you can unmute and ask question. जी अस्सलाम वालेकुम. Welcome salam. जी just wanted to know out of curiosity that dashboard thing, can we Mhm. create that in Excel, or is it like we need to have a different software for that? No, we can create it in Excel. Inshallah, we will see at the end of the course, we will have one special session for the creating a dashboard, and we can do whatever मैंने आपको दिखाया screen में, all this thing can be done in Microsoft Excel. जज़ाकल्लाह, शुक्रिया. Hayakallah. Zishan Khan, you can ask. Amir Basha, you can ask. अस्सलाम वालेकुम. Salam. ये जो पिवट टेबल है बिगिनिंग से बताएंगे ना सर? हाँ देखिए, I forgot to tell one important thing. For example, we have 362 attendees in the course. So we will assume everyone as a very basic knowledge user. So शुरुआत से हम लोग जाएंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेल से हम लोग जाके धीरे धीरे करके सब कुछ सिखाएंगे. Inshallah, when we teach you pivot table, we will teach you from the basic. So at the end of the course, you will master everything, inshallah. So I know some people, they already know half of the Excel. So don't worry. आप दूसरों के लिए आप सब्र करिए. And then when other people, they understand, they know, then we will go one by one, inshallah. Sir, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह.
Yeah. Sir, this training would be conducted on Office 365 or normally. See, we will teach in normal Microsoft Excel, but it does not make much difference. It's Microsoft Office 365 and Excel desktop software, both are same. So there is not much of a difference. So would you provide any certificate? The organizers will answer whether they will provide the certification or no. Yes, there Shoaib, will be course completion certificate. Course completion certificate will be issued, and Can that you would announce be a for digital the certificate. question and answer? Can you go again? yeah, keep unmuting. So, yes, you can ask Radia Sultana, sister. Yes, Assalamu alaikum, sir. Sir, I just Welcome. want to ask that when we'll complete this course and you'll issue the certificates, will these certificates be work to get any online job? We cannot guarantee, but it is, of course, it will help you in finding definitely some jobs. Moreover, it depends how well you attend your interview and how confidently you present yourself. So just having a certificate is not enough, but definitely it will add this thing. Thank you, sir. You're welcome. Yes, sir. Sir, may I request to give a kind of study material or assignment so that we can be prepared before the session, if it is possible, then only. Yeah, sure. Inshallah, this is just an introduction class. That's why we will not have any assignment today. But following classes, definitely we will give you homework to bring it in next class. And also during the time, you can share it in the WhatsApp group. Okay. Thank you very much, sir. Saifuddin bhai, next question, please. Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। आप ये एक्सेल का ही ये जो कोर्स है वही सिखाते हैं या फिर अभी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है जस्ट लाइक ग्राफिक्स एंड मैं अदर कोर्सेस? YouthWing जो है वो वक्तन अलग अलग कोर्सेस चलाते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके एक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे, एक वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स करेंगे। बट यू विल आप ये ग्रुप में टिके रहिए। व्हेनेवर वी हैव सच कोर्सेस वी विल अनाउंस इट इंशाल्लाह। ओके, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाफर सर, मैं ये बोल रहा था कि जो एक्सेल का वर्जन है वो एक्चुअली अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो अभी 2010 भी यूज कर सकते हैं उसमें आप जो डाटा बताएंगे? हाँ बिल्कुल। थोड़ी चीजें शायद वो नहीं चलेंगे, लेकिन मोस्टली 90% चल जाएंगे, मसला नहीं है। आप ओके, दूसरी जी जी यूज कर सकते हैं। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि जो आपने डाटा जो मतलब नोट करेंगे एक्सेल शीट में, उसके बाद फार्मूला के थ्रू जो चार्ट बनेगा ना, वो फार्मूला रहेगा ना उसमें? चार्ट में देखिए, डेटा को सेलेक्ट करके एक चार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चार्ट बना देता है। सो हम लोग तो कौन सा देखेंगे डिजाइन चाहिए वो ले सकते हैं? यस। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अभी जैसा आपने बताया असाइनमेंट्स और स्टडी मटेरियल्स वगैरह आप शेयर करेंगे, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप पब्लिक करेंगे, इट्स जस्ट अ सजेशन सर। तो अगर आप उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पब्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही वो डिस्टर्बेंस होगा, पीपल विल कीप मैसेजिंग in the group. So I'll suggest you to create a Google Classroom so that we can upload the assignment on the Google Classroom directly after the completing the assignment. It will be better.
Okay, I will leave it to the organizers. Shoaib, you make a note of it, and you will internally you can discuss, inshallah. Yeah. Otherwise, the people will keep messaging in the groups. Yeah, you're right. And No, we will so, make sure group में जो है most of the time it will be admin only controlled में रहेगा, and only when we want to see some of the response from you, we will open that group so that you share the screenshot of your work. वो उस टाइम पे ओपन करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे. We know we can share that screenshot in the Google Classroom so that you can easily import in the Excel or Word file. No problem. It would be better. Yes, yes. Your suggestion is very valuable. Otherwise, you can send me direct message. I'll share in group because we cannot open for everyone each and every time. Yeah, so the Google Classroom is a better option. Sir. Yes, inshallah. We will keep you informed in the group, inshallah. Okay, Hello, okay, thank you. Assalamualaikum. We will take one last question, then we'll close. Assalamualaikum. Welcome, salam. Ji, sir. Sir, I have a question. How many days in this course? ये 2 महीने का कोर्स रहेगा. वी विल सी हाउ वेल यू पीपल पिक अप. जल्दी जल्दी पिक करेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे. अगर स्लो पिकअप होता है तो लेट होगा. सर ये वीकेंड में क्लास होगी कि डेली बेस्ड क्लास है? नहीं, आई थिंक दे हैव शेयर्ड द फुल शेड्यूल. एवरी संडे एंड वेडनेसडे, हफ्ते में 2 बार रहेगा. ओके ओके सर. Brothers and sisters, I request you to ask the related question for the only for the Excel courses. Don't ask the timing and these all things. Already we mentioned. हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है कि टाइमिंग कब रहेगा, क्लासेस कब रहेंगी, और जो कुछ भी है ग्रुप में ऐसी डालेंगे. रिलेटेड चीजें आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. ऑलरेडी हम ग्रुप में इन्फॉर्म कर रहे हैं. आपको बस क्वेश्चन ये करना है कि कोई डाउट्स है तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछिए. अदरवाइज प्लीज don't ask these questions. Assalamu alaikum. Welcome, salam. What is Marcos? Macros. Oh, sorry, macros. ओके, मैक्रोस जो है एक छोटे छोटे प्रोग्रामिंग वो एक्शन लिखते हैं कि डू दिस डू दैट करके. द फीचर विच इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल, आप खुद उसको लिख सकते हैं. दे विल गिव यू अ बेसिक सिंटैक्स ऑफ मैक्रो कैसा लिखना है, एंड देन यू कैन डू ऑन योर ओन के जो चाहिए, जो फीचर नहीं है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं. सो वी विल सी इंशाल्लाह. जब मैक्रो सेक्शन में आएंगे तो मोर डिटेल हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह. सर I wanted to just ask anything. अगर कोई मतलब कोर्सेस होते जा रहे हैं, वीकेंड्स में अपन क्लासेस लेते जा रहे हैं, तो अगर अपने कोई एग्जाम्स वगैरह भी रहते सर, एग्जाम्स या फिर टेस्ट वगैरह लिखना? नहीं, टेस्ट एग्जाम वगैरह नहीं रहेगा. जस्ट जो होमवर्क देंगे उसको आपको नहीं करना है. सर, ये मतलब एक पर्सन को नॉलेज कितना है, एक पर्सन में क्या टैलेंट है, एबिलिटी है के लिए, इसलिए पूछना था. वी कैन हैव वन फाइनल ऑनलाइन एक टेस्ट के जैसा हम लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर से वो रख के. वी विल सी. शोएब भाई इसको नोट करिए. We can have one final exam kind of thing wherein they can be allowed to answer and this thing. We can do that. Okay, Jafar sir, I think we can close. Chat में पूछ रहे हैं कि when I don't have a desktop or sometime else, then what can we do the course? बहन फरा बहन, देखिए ये कोर्स को अगर पूरा बेनिफिशियल नॉलेज आप इसको फायदा उठाना है, then either computer or a laptop is better to use it. अगर आप पैरेलली यूज नहीं कर रहे तो there is no use of सिर्फ अटेंडिंग द थियरी. ये कैसा है, जब आप स्विमिंग के क्लासेस लेते हैं, जब तक आप पानी में उतर के आप तैरेंगे नहीं तो आपको सीखेंगे नहीं. सिर्फ वॉचिंग ए वीडियो और लिसनिंग टू ए लेक्चर इज नॉट एनफ. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जी जनाब, आज के लिए आई थिंक इनफ है इतने क्वेश्चन आंसर. बाकी के तो I think this must be enough. Inshallah, we will take up in future classes. Next class, inshallah, brother Naveed will start with the introduction of the overall environment of Microsoft Excel
and he will start with the in detail formulas, all the stuff, inshallah. और एक बात बतानी थी हमारे जितने भी सब पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और जो कोर्स में आप लोगों को जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया गया है उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, ना आने वाले सिलेबस के बारे में क्वेश्चन पूछिए। जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आने वाले अभी आप बहुत सारे लोग पढ़े नहीं रहते, उन लोगों को फिर मुश्किल हो जाएगा कि ये क्या बंदा पूछ रहा है, बहुत लोग से कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लीज अवॉइड सही काइंड बात है। ऑफ। This is very good suggestion by brother Shoaib. When you want to ask question, जल्दी करके आप फ्यूचर का क्वेश्चन अभी मत पूछिए, you have patience, और जो क्लास में जो सब्जेक्ट हुआ रहता है उसके बारे में आप फोकस करके उसको सीखने की कोशिश करिए। Okay, sir, we can now close the session. Yeah, Jazakallah khair. Thank you very much, everyone. See you, inshallah, Wednesday with a new subject and new topics, inshallah. Thank you very much. Inshallah. Thank you very much, everyone.